Okay, I have started the recording and I hope you can all hear me clearly. So let's get started. So yesterday we had stopped at problem number 11. 12 is about a circular queue. So I am skipping that whenever we do queue, the topic of queue, right, which will be coming after the topic of stack. That's when I'll revisit that problem. But for now, let's continue from problem number 13. I hope you can all see the blog. Okay, so here the problem is for us to find the length of the longest consecutive subsequence. So what do you mean by the longest consecutive subsequence? So it's like, look at this example here. So we have a set of numbers, not necessarily in sorted order, right? So what you do is you sort it, right? And then what do you think is the length of the longest consecutive subsequence? A subsequence is like parts of the array that can be put into a sequence, right? So consecutive subsequence would be this: 1, 2, 3, 4. There they might be at any location in the array, right? But it's your job to figure out that if you rearrange the array in a particular way, you should be able to bring those consecutive elements to one place and figure out the lengthiest one out of them, right? Which one is the longest? For example, here we have 1, 2, 3, 4, 9 and 10. So the length of 9, so 9 and 10 also form a consecutive subsequence of the array, but their length is only 2. But 1, 2, 3, 4, they form the longest consecutive subsequence. Am I making sense to you? Yes, sir. Okay. So for that matter, what you do is when you take an array, you sort it. Just use some kind of a quick sort or whatever. So in the code, I have used quick sort. You don't have to write the code of quick sort. Just use this one method call, which will take your array and sort it in n log n time, which is the most efficient that you can have for sorting. Then what do is you set two variables. So you probably know what is a streak, right? A streak is some kind of a continuity, right? Every day you get up, take a bath, right? Sometimes you don't. Let's just say you want to set up a streak. Like, let me figure out the longest consecutive number of days on which I get up and take a bath. So today you take a bath, the streak is 1. Tomorrow you get up, take a bath, the streak is 2. You do it for 7 days consecutively. So your longest streak is 7. So let's just say on the 8th day you are lazy, you don't take a bath. So your streak is broken. It begins from 0 again, right? So that is a streak. So you set the longest streak and the current streak to 1, all right? Then you begin probing the numbers, right? What do? You start a loop and you compare 2. So you assume this 1 is the longest streak in and of itself, right? It's one number, that's the longest streak. That's why you set longest streak and the current streak both to 1. Now you go to 2 and you compare it with 1. Is 2 just 1 ever 1? Like, is 2 and 1 at a gap of just one number? Yeah, they're consecutive, right? So what you do is, yeah, so the current streak is 2, okay? Then you compare 3 with 2, right? Then 3 is just 1 away from 2. Then the current streak becomes 3. Then you go to 4, right? 4 is just 1 away from 3, not just in terms of position, but also in terms of where they lie on the number line, right? And you set the current streak to 4. But when you come to 9 and you compare that with 4, right? They are not consecutive integers, right? So what happens? Our streak gets broken. And the current streak of 4 is definitely bigger than the longest streak of 1, right? So what do? Just like you find the max, right? You set the longest streak to 4. That is the longest you have found so far, right? And then you move on. Like, your streak has been broken. So you set current streak to 1 again. The streak of 4 has been broken, right? And then you compare 10 with 9. Sure, the current streak becomes 2 because 9 and 10 are kind of like the consecutive integers. Then you compare 20 with 10. Again, the streak gets broken, but the current streak of 2 is not bigger than the longest streak of 4. So the 9 and 10 will not be able to beat the streak set up by 1, 2, 3, 4, right? So in the end, you go and you print the
longest streak is 4. I hope this made sense. You just do a single loop here, right? You start from 1 because the first number at 0 is kind of its own streak in itself. That is why you set the longest streak to 1 and the current streak to 1, right? That is for just for first number. You start from the second number all the way until the last number, and you check, is the current number, if they're not equal, right? If they're equal, then they're duplicates. That will not count towards a streak. If they're not equal and they're just 1 away from each other, it's like the current number is 1 plus the previous number. Just like 2 is 1 plus 1, 3 is 1 plus 2, 4 is 1 plus 3, and 10 is 1 plus 9, right? If that is the case, you increase the current streak, right? Otherwise, what you do, that means the streak got broken here. If they are not just 1 away from each other, the streak got broken. Just like after 4, you got a 9. That is where the streak got broken. After 10, you got a 20. That's where the streak got broken. The streak gets broken. What do? You check whatever the streak that got built up until now, is that bigger than the longest streak that you have encountered so far? If it is yes, then make that the longest streak and you set the current streak back to 1, right? In an effort to figure out if there is a longer one later on. That's all. If you do that, you will get the length of the longest consecutive subsequence in the array. Did that make sense to all of you? Hello? Yes, sir. Okay. All right. Anyone else wants to make a comment? Anyone? All right. Just go through the blog here and try out these programs. Sometimes it might be difficult for you to pick it up depending on your mood or how much tea or coffee or caffeine that you have had. You might be sleepy or you are like jittery because of too much coffee. It can so happen that you're not able to understand a few bits and pieces here and there. So whenever you are cool, calm, like properly slept, come back to the blog or just watch this video again and you'll be able to understand what is going on. Okay, let's go to the next problem. Find the contiguous subarray with the largest product. So here the subarray, it's not a subsequence, it is a subarray. So we cannot sort the array. All the elements have to be next to each other in the array, right? And it has to be contiguous. You cannot have any gaps. And with the largest product, and this array can also have negative numbers. All right. So let's take the example. Let's try to understand with the help of an example first. Let's just say your array is like this. It's like all kinds of numbers jumbled up, not in any particular order, with negative numbers. You know what can happen when you multiply a positive number with a negative number, right? The result is negative, and the bigger negative it is, the smaller the product, right? Minus 20 is less than minus 10, right? So you have to keep that in mind. So let's take these 3 variables: maximum product, minimum product, and the result, right? So let's set the maximum product to the first number, okay? If there is only one number, then it's just going to be that number, right? That is the maximum product. The minimum product can also be set to the first number. We usually do a similar kind of thing while trying to find the max and min in arrays. And the result is initialized to the first number as well. Okay, and you will see why these are useful. Okay, so we have the max product, min product, and the result, all 3 set to the first number, which happens to be 2. Then we start the iterative process. So what do? We look at the next number, which is 3. Since 3 is positive, we do not have to swap max product and min product. And why you don't have to do this and when you have to do this will become clearer when you encounter the -2 number. Just hold on, don't get too confused. So you calculate the max product as max of whatever number you just encountered, which is 3, or the product of the previous max product that you have had multiplied by 3, which is the new number. So whatever is the max so far, right? It can so happen that if this number was, let's just say 100, right? Then would you still consider the previous product or the product of 2 or 3? 6, you would not, right? Because 100 in itself is a pretty a big number, right? Though in this case, 2 into 3, 2 into 100 would be 200, which would again be bigger. But it can so happen that sometimes the number that comes in itself
would be capable enough to ignore whatever was there before in case you have negative numbers. So, and all of this will become clear as you look at the iterations, right? Okay, so the number that came in was 3, but if you multiply whatever was the max product before, which was 2, with the new number, whatever is the max, you make that the max product so far. So now we have two numbers. So previously our product was 2. Now we have encountered 3. So 2 into 3 is 6. So that can be considered as the max product so far. And min would be the minimum of 3, and 2 into 3 again, which would be 3. Okay. The minimum here, the minimum out of these two. So 6 is bigger, 3 is the one that you encountered. So you take 3 as the minimum so far, which is 3. And why we are keeping a min product will become very clear to you very soon. And the result would be the max of both of them, the result and max product. So max is always going to keep the maximum product with you, and the streak can break, right? It can break, but result is kind of storing the max product encountered so far from the left all the way till the end, right? That is kind of the ultimate source of truth of what the maximum has been so far, and that is also set to 6. Okay, so these are the current values. So 6, because we encountered a 3, 2 into 3 is 6, and out of the result, which was 2, and now the max product, which is 6, that is the bigger number. So result has been set to 6. Max product was the max of the new number that you saw, and the product of the previous number and the current number, which is 6, and the min is going to be 3, which is the number that has been encountered right now. All right. So things change up kind of very drastically when you encounter the -2. So since the number -2 is a negative number, you have to swap max and min. Why? Can someone tell me why? Why do you have to swap? Because you saw a negative number here. Multiplication with a negative number. Yeah, and because it is a negative number, you'd want a smaller number to be multiplied with that, so that you end up with the bigger number, which is still negative though. It is still going to be negative. Like, look what happened here. Because we swapped max and min here, now max product kind of became 3. And you multiply 3 with -2, you get -6. And when you multiply 6 with -2, you get -12. Now -12 happens to be a smaller number than -6, right? To be able to give max product the best chance of choosing a bigger number, we kind of give max product the value of min product. So that when that is multiplied with a negative number, you do not go that way back into the negative number line, right? That is the reason why we do that. So here, it's the same pattern. So max of -2 is the number that you just encountered, or the previous max that you have had, which is 3, because we just swapped min and max into the number that you saw right now. And that happens to be -2. For min, what do you do? It's the number that you saw, the previous minimum, which was like what the max was because you swapped, and the number that you saw, -12. And the result is going to be the max of these two. And the result was 6. That was 2 into 3. That is not going to change, right? So this is what you have. So when you get a 4, what do? Since 4 is positive, you do not swap max and min, right? And you go about business as usual. You get a 4 here, you get a -48 here, and the result still remains at 6, right? All right. And the final output is going to be 6, which is basically the product of 2 and 3. Is that not the case here? Look at this. What else can you multiply to get the biggest product out of this array? It is going to be 6, 2 into 3. Nothing else. Right? So this is probably the most challenging problem here in the blog, right? Take a look at this once more and convince yourself why we have, someone has a question here, please. Sir, if we only had positive integers in the array, so we would not need to maintain a min product variable. Yeah, no, you don't have to maintain a min product variable. Sir, I did it without the negative integers. Yes, yeah, that's fine. That's fine. I mean, there was nothing in the question that told that you can only have positive numbers, so that's why I've also taken negative numbers. So we're maintaining min product only because of that. So that we can give max product the best chance of not going too much back into the negative number line when they encounter a negative. That's why we just swap them. That's all. Okay, does this make sense to everybody?
maybe not everybody, but if you come back and watch this recording or go through the block again, it will become clear. Then we move on to, yeah, okay, makes sense. Next we go for spiral order matrix traversal. This is actually an easy problem, but you know, you have to have a little bit of practice and a little bit of bookkeeping of what you have just encountered. Like spiral order is basically this. If this is your 2D array, you print 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then you go print 12 and 18. Then you print 17, 16, 15, 14, 13. Then you print 7, 8, 9, 10, 11. 12 has already been printed. So you kind of go like this spring kind of a thing, right? Like those patterns you see on lollipops, right? So you start from the outer boundary top left and you try to go in a spiral pattern all the way to the center of the matrix. So here you have to kind of, the idea here is you have to keep all of these boundaries. Like कौन सा रो तुमने प्रिंट कर चुके हो, कौन सा कॉलम तुमने प्रिंट कर चुके हो, उसके बाद तुम कहां तक जाओगे, राइट? ऐसे करते करते तुमको चारों बाउंड्रीज को ऐसे सेंटर तक लेके आना है. तो यहाँ पे ऑफ बाय वन एरर्स बहुत सारे हो सकते हैं कि कोई कॉलम तुमने पहले प्रिंट कर रखा था, तुम उसको फिर से प्रिंट कर रहे हो, तुमको थोड़ा सा फिर कोड को एडजस्ट करना पड़ेगा. बस वही है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यूज के लिए, लेकिन कभी कभी वो लोग पूछ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारे इफ द नल से चलता है कि तुम लोग बस बाउंड्री देख रहे हो कि चलो तुम कोई बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रहे हो कि कोई तुमने प्रिंट कर दिया और फिर से तुम उसको प्रिंट कर रहे हो. बस इतना अगर ध्यान में रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा. और इसमें बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के लिए. तो इसको मैं इतना ही समझाऊंगा, इसके आगे मैं जाने नहीं वाला, क्योंकि ये देखने में बहुत मुश्किल लगता होगा लेकिन इतना मुश्किल है नहीं इसको करने के लिए. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसको समझा रखा है अच्छे से. पहले हम ये सबको प्रिंट करेंगे, ठीक है, फिर हम ये जो कॉलम है एक्स 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 वाला ये प्रिंट करेंगे, फिर लास्ट रो को उल्टे डायरेक्शन में प्रिंट करेंगे, फिर से और एक रो को हम इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे अगर तुम कोड में देखो ये चारों चीजें यहाँ पे है. ये पहला वाला रो है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, और ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस करके जो ये वाला रो है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर रहे हैं. तो ऐसे होते होते तुम्हारा चारों के चारों प्रिंट हो जाएंगे. ये तुम्हारे बाउंड्रीज है. ठीक है, पहला रो यहाँ पे है, एंडिंग रो यहाँ पे है, पहला कॉलम यहाँ पे, एंडिंग कॉलम यहाँ पे. ये के एम एल एन को तुमको ऐसे सेंटर पे धीरे धीरे लेके आना है ताकि तुम बाउंड्री पे हिट करो, फिर नीचे आओ, फिर बाउंड्री पे हिट हो गया, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे करते करते तुम सेंटर तक आ सकते हो. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, तुम समझ जाओगे. इतना मुश्किल नहीं है ये. एक्चुअली वन ऑफ द इजिएस्ट प्रॉब्लम्स है ये. अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 16 में आते हैं. इट इज आस्किंग अस टू फिगर आउट द मिनिमम स्वैप्स to group all elements less than or equal to k together. So we are given the value of k. We have to figure out all the elements less than equal to k and bring them together in the array. कहीं पे भी लेके आओ, उनको तुम शुरू में लेके आ सकते हो, एंड में लेके आ सकते हो, कहीं बीच में रख सकते हो, लेकिन वो सबको तुमको एक जगह पे लेके आना है और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप करके लेके आना है. ठीक है, स्वैप तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं. उनको एक जगह लेके आना है, कहीं पे भी एक जगह, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स करके. क्योंकि अनलिमिटेड स्वैप से तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम स्वैप से उसको कैसे करें. चलो ये काफी आसान प्रॉब्लम है. अगर इसको तुम अच्छे से समझ सको तो तुम समझ पाओगे. यहाँ पे एग्जांपल पे देख लो. सो दिस इज अवर इनिशियल अरे सेटअप एंड द वैल्यू ऑफ k इज 5. what is the significance of k equal to 5? So we have to get all the numbers less than equal to 5 together in the array. ओके, जितने भी नंबर हैं जो कि k के समान है, 5 के समान है, तो 5 से छोटे हैं, उन सब नंबर को एक जगह लेके आना है और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में उनको एक जगह लेके आना है. तो यहाँ पे वो नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 5 है और 4 है. कितने नंबर्स है? 3 नंबर है. तो पहला काम हमारा यह है कि काउंट ऑल द एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू k. सो वी हैव 2, 5, 4. सो 3 एलिमेंट्स. ओके, नाउ वी हैव टू मेंटेन अ विंडो. एक विंडो ऐसे मेंटेन करो. ये हो गया तुम्हारा इनिशियल विंडो 279 का, और वो विंडो को हम मूव करके जाएंगे. विंडो क्यों मेंटेन कर रहे हैं? कोई बता सकता है एक विंडो ऑफ फिक्स्ड साइज हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे एक विंडो के अंदर ही हमारे 3 एलिमेंट्स आएंगे. वो शुरू में आ सकते हैं, यहां पे आ सकते हैं, यहां पे आ सकते हैं. ये वाला विंडो हो सकता है, नहीं तो ये वाला विंडो हो सकता है.
ये 4-5 विंडो में से कोई एक विंडो हो सकता है जिसके अंदर के हमको सारे वो जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 4 कोई भी ऑर्डर में उसके अंदर हमको उसको रखना है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स यूज करके। ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं सबको? Yes, sir. Okay. So we have to calculate the initial bad count. What is the initial bad count? ये जो पहला वाला विंडो है उसके अंदर कितने बैड एलिमेंट्स हैं। बैड एलिमेंट्स मतलब जो कि ग्रेटर देन के है, जो कि ग्रेटर देन के है। अच्छा 279 में कितने बैड एलिमेंट्स हैं? देयर आर 2 बैड एलिमेंट्स 7 and 9. Okay. So the initial bad count is 2. Then we have to slide the window. वो जो विंडो को घसीट के लेफ्ट से राइट लेके जाओ, ठीक है। अब ये वाला विंडो हो गया 795, इसका बैड काउंट क्या है? 2 है। इसका बैड काउंट भी 2 है। क्यों? 7 and 9, 5 is our good number, right? But 7 and 9 are bad numbers. They're bigger than k. Then you again slide the window. What do you get? You get how many greater than k? ठीक है। Use the minimum number of elements in any contiguous subarray of size t. Initial set of window 279, bad equal to 2. Slide the window and update the bad count. ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इनिशियल विंडो 279 था, बैड 2 था। फिर हमारा विंडो स्लाइड किया 795 हुआ, यहाँ पे भी बैड रिमेन्स 2, 7 and 9 आर स्टिल ग्रेटर देन के। फिर 958 हुआ, यहाँ पे भी 2 नंबर्स तुम्हारे बैड हो गए 9 और 8। फिर 587 हुआ, यहाँ पे भी 2 है, 2 है। तो कोई भी विंडो ले लो उसके अंदर 2 नंबर्स ऐसे निकल के आते हैं जो कि के से बड़े हैं। कैलकुलेट एंड कीप ट्रैक ऑफ द मिनिमम बैड फाउंड ड्यूरिंग द स्लाइडिंग। ठीक है। कोई भी अगर ऐसा बैड विंडो है जिसमें कि बैड काउंट सबसे मिनिमम है, दैट इज द विंडो ऑफ आवर इंटरेस्ट। ऐसा क्यों है? कोई भी अगर एक विंडो है जिसके अंदर गुड नंबर्स ज्यादा है और सबसे मिनिमम नंबर ऑफ बैड नंबर्स है, दैट इज द विंडो ऑफ आवर इंटरेस्ट। ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है क्या? Minimum swaps requirement. एग्जैक्टली। तो उस विंडो के अंदर जितने भी गुड नंबर्स हैं वो ऑलरेडी हैं। कि 1 और 2 जो बैड नंबर्स है ना, उनको अगर हम स्वैप करा दे गुड नंबर के साथ, तो वी विल गेट दोस गुड नंबर्स एट वन प्लेस। वो एक जगह पे उतने गुड नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है। चलो ये एग्जांपल में तो सारे हमारे विंडोज जो हैं उनके अंदर बैड काउंट 2 था। तो कोई भी विंडो उठा लो, ये 279 को ही उठा लेते हैं। 7 को किसके साथ स्वैप करें? 5 के साथ स्वैप कर लेते हैं। 9 को हम 4 के साथ स्वैप कर लेते हैं। तो 254 यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं? तो we will need at least 2 swaps for this array to get the numbers. कोई भी दूसरा विंडो ले लो, 587 ले लो, 5 ऑलरेडी है, 8 को 2 के साथ स्वैप करो, 7 को तुम 4 के साथ स्वैप कर लो, तो ये 5 2 4 हो जाएगा। कोई भी विंडो ले लो, हर विंडो में बैड काउंट 2 है, कोई भी विंडो ले लो, तो यू विल नीड मिनिमम ऑफ 2 स्वैप्स। अगर कोई भी ऐसा विंडो होता जहां पे कि बैड काउंट अगर 1 होता, तो वो वाला विंडो आप चुनते हैं। उसमें एक ही बुरा नंबर है, उसको स्वैप कर लेते हो, जो बचा है जो नंबर बाहर गुड नंबर जो कि विंडो के अंदर आया नहीं है उसको लेके आ जाएंगे, एक स्वैप में हो जाता है। लेकिन इस केस में कोई भी विंडो ले लो, तुमको 2 स्वैप तो कम से कम करने पड़ेंगे। ये समझ में आया सबको? आ गया समझ? ओके ओके ठीक। Smallest missing positive integer. So this function finds the smallest missing positive integer from an unsorted array. चलो इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये हो गया हमारा इनिशियल अरे सेटअप। तो हमको बोला गया है कि स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर कौन सा है। तो इसमें तो पहले हमको नेगेटिव नंबर्स को एक तरफ लेके जाना है, पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ लेके आना है। ठीक है। ये कैसे करें? ये मुझे ओरेकल के इंटरव्यू में पूछा गया था। ये मेरा पहला क्वेश्चन था जब मैं बिट्स से ओरेकल में गया था डेवलपमेंट के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि कुछ एज और बीज एक अरे के अंदर बिखरे पड़े हुए हैं, यू हैव टू गेट ऑल द एज टू वन साइड एंड ऑल द बीज टू द अदर साइड, जो कि यहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम है। वी हैव टू गेट ऑल द नेगेटिव नंबर्स टू वन साइड एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स टू वन साइड। Now, who can tell me different ways of doing it? Can we have a discussion in the class of how we can get all the negative numbers to one side and all the positive numbers to one side? We don't have to sort them. We don't have to get them in any particular order. Just segregate them. Negative numbers on one side, positive numbers on one side. कैसे कर सकते हैं?
सोच के मुझे बताओ। ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने कर भी दिया था उसको, मुझे नौकरी मिल भी गई थी। लेकिन अभी तुम्हारा टर्न है, इसको अगर तुमको पूछा और मैंने प्रिपेयर, ये क्वेश्चन आएगा, हम लोगों ने उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं किया। उस टाइम पे गिग्स फॉर गिग्स, लीड कोड, ये सब होते नहीं थे। हम लोग ऐसे ही जाते थे, बस होता था, नहीं होता तो नहीं होता था। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि अभी इसको सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सोचो सो सोचो। बेसिकली लीनियर सर्च करते हैं वैसे करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव नंबर मिल जाएगा उसको उठा के फर्स्ट पोजीशन में डाल देंगे। हाँ, फर्स्ट में डालोगे, लेकिन फिर बाकी नंबर को क्या करोगे? राइट तरफ या मतलब जो नंबर फर्स्ट पोजीशन में है, जहाँ से उठाए हैं नेगेटिव नंबर, वहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, तो इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है? इसका वर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे पास जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे राइट में हैं, और जितने हाँ। पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में हैं। तो ये हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा, है ना? तो इस केस में हाँ। तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो n स्क्वायर टाइम में चलेगा, क्योंकि तुम हर नेगेटिव नंबर के लिए सबको एक एक बार शिफ्ट कर रहे हो। सर अगर नहीं, पूरे बस array को सबको नहीं sort करेंगे। कर दे तो n log n में हो जाएगा। क्या 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 क्या? अगर पूरा एरे को सॉर्ट कर दे तो n log n में हो जाएगा। ठीक है, जो पलाश ने बोला, ये युवराज है ना, वॉइस से पता लग रहा है मुझे। यस सर। हाँ, तो पलाश और युवराज, पलाश जो बोल रहा है उसके लिए शायद n स्क्वायर लग सकता है। नहीं सर, हम बस खाली एक ही एलिमेंट जो हमारा स्वैप कर रहे हैं, -1 को ही स्वैप कर रहे हैं, तो बस -1 को थर्ड पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन में डालेंगे, 0th पोजीशन में, और 3 वाले को -1 में डाल देंगे, मतलब हाँ, तो सेकंड। नहीं, हाँ, लेकिन फिर दूसरा जो नेगेटिव नंबर रहेगा उसको भी जब रखोगे फिर से तुमको सबको स्वैप करना पड़ेगा। एक ही नेगेटिव नंबर थोड़ी ना है। सारे को नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है सर। लाइक तुम्हारा ये n स्क्वायर तक जा सकता है, लेकिन युवराज जो बोल रहा है उसको सॉर्ट करके हम n log n में कर सकते हैं। लेकिन मैं ये दोनों सोल्यूशन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये लीनियर टाइम में कौन करके बता सकता है, n टाइम में कौन करके बता सकता है? दो पॉइंटर यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, एक बोलो कैसे करना है। लास्ट साइड एक लेंगे और एक फ्रंट साइड लेंगे, हाँ। दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड नेगेटिव ले रहा है, राइट साइड पॉजिटिव ले रहा है, हाँ, सो अगर मेरे राइट साइड में कोई नेगेटिव आएगा तो स्वैप कर देंगे। ठीक है, सही बोला। तो ये एग्जैक्ट सेम चीज मैंने अपने इंटरव्यूअर को बोला था और काफी खुश हो गया था वो। तो ये एक क्वेश्चन के आंसर ही मुझे जॉब मिल गया था। नहीं मतलब फर्दर इंटरव्यूज हुए थे, ओएस के बारे में क्वेश्चंस, इंटरप्ट क्या है, पोलिंग क्या है, बहुत कुछ पूछा था उन लोगों ने। लेकिन ये एक चीज मैंने सी में उनके सामने कोड करके दे दिया तो मेरा हो गया था, उसमें नौकरी हो गया था। और उस टाइम पे अराउंड 10 लाख पर एनम का जॉब लगा था। दिस वाज लाइक 14-15 ईयर्स अगो। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस थिंग्स। इंटरव्यू को पता चलता है कि ये तुरंत आंसर दे रहा है ना, मतलब ये सोच रहा है इसके बारे में। मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने सोचा नहीं है, ये हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो शुरू के टाइम में भी हम इतना कुछ कर रहे हैं ना, n स्क्वायर, n log n, ये हर कोई कर पाता। अगर थोड़ा सा सोचते तो हो जाता। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कर सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं, वो मूड पे डिपेंड करता है। तो नंदेश ने जो बोला कि 2 पॉइंटर को लेके रखो और हमको सारे नेगेटिव नंबर को बाएं तरफ लेके आना है और सारे पॉजिटिव नंबर को दाएं तरफ लेके जाना है। तुम 2 पॉइंटर को रखो, उसने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया वैसे, पर ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर को मेंटेन कर रखें। अगर लेफ्ट की तरफ हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, अगर लेफ्ट पॉइंटर एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको वहां पे खड़े रहने दो, उसको आगे मत बढ़ाओ। राइट पॉइंटर अगर एक नेगेटिव नंबर पे आ गया है तो उसको वहां पे खड़े रहने दो। ठीक है, लेफ्ट वाला अगर पॉजिटिव पे है, राइट वाला अगर नेगेटिव पे है, दोनों को स्वैप करो और फिर दोनों को आगे बढ़ाओ। मतलब लेफ्ट को राइट में लो, राइट को फिर लेफ्ट में लेके आओ। अगर लेफ्ट वाले में नेगेटिव नंबर है, उसको और एक बार आगे करा लो, और एक बार नेगेटिव नंबर आ गया, उसको फिर से आगे करा लो, जब तक एक पॉजिटिव नंबर नहीं आ जाता। राइट वाला अगर एक पॉजिटिव नंबर पे खड़ा हुआ है, उसको फिर लेफ्ट की तरह लेके जाओ जब तक एक नेगेटिव नंबर नहीं आ जाता। फिर से जब चांस आएगा कि लेफ्ट वाला एक पॉजिटिव नंबर पे खड़ा हुआ है और राइट वाला एक नेगेटिव नंबर पे खड़ा हुआ है, उनको फिर से स्वैप करो। समझे? अच्छा, यहां पे क्या करना है, हमको एक पॉइंटर यहां पे रखना है। ठीक है, और एक पॉइंटर को हमको 2 बार स्पेस दबाने से वो मैकबुक यहां पे पीरियड लगा देता है। ठीक है, एक पॉइंटर यहां पे रखेंगे। हमको क्या करना है, सारे नेगेटिव नंबर्स को कहां लेना है, लेफ्ट साइड में, है ना, और सारे पॉजिटिव नंबर्स को राइट साइड में लेके आना है। तो क्या करेंगे यहां पे, क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये तो 1 है, ये यहां पे इसका जगह है क्या? इज इट द करेक्ट प्लेस फॉर 1 हियर? नो सर। हाँ,
ठीक है, तो नहीं है तो लेफ्ट पॉइंटर को यहीं पे रहने दो, ठीक है। अच्छा, ये 2 का सही जगह है, ठीक है। तो राइट वाले को हम मूव करेंगे जब तक कि वो एक नेगेटिव नंबर के ऊपर ना आ जाए, और जब राइट वाला पॉइंटर हमारा नेगेटिव नंबर के ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट वाला नंबर हमारा पॉजिटिव के ऊपर वैसे भी है, हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। मतलब यहां पे आ जाएगा -8 और यहां पे आ जाएगा, क्या था उधर, 1 था, ठीक है, मैं भूल गया था। चलो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -8, ठीक है, दोनों को हमने स्वैप कर दिया। फिर क्या करेंगे, अच्छा ये -8 का सही जगह है, फिर क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये गलत जगह पे है, तो वहां पे लेफ्ट क्या करेगा, वेट करता रहेगा, और ये क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये गलत जगह पे है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को स्वैप कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -7 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, अब हो गया तुम्हारा। और फिर ये फिर मूव करता रहेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये तुम्हारा मूव करता रहेगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जब तक कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस ना कर ले। जब वो क्रॉस कर लेंगे फिर हमारा सॉल्व हो गया। ये समझे तुम, देखो सारे नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे आ गए, सारे पॉजिटिव नंबर इधर आ गए, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ओके, तो मुझे बस यही पूछा था। और मुझे एंड में जाने के पहले, मतलब जब जॉब कन्फर्म करने के पहले तो पूछा था कि ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए बी ऐसे हो क्या है, सब ए को तुम लेफ्ट में लेके आओ और सब बी को तुम एक जगह लेके आओ। फिर से वो जो मैनेजर है वो आता है, मुझे बोलता है कि ठीक है तुमको मैं और एक चैलेंज देता हूँ। बोला कि, और मेरा सीवी सबसे ऊपर था क्योंकि मेरा सीजी पे सबसे हाईएस्ट था बिट्स में, तो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो जॉब भी मुझे सबसे पहले मिल गई थी क्योंकि बाकी लोग लाइन में खड़े भी थे, मेरा हो भी गया था, मैं बाहर जाके भाई दोस्तों को पार्टी वार्टी दे रहा था। और बाकी लोग, मैं वैसे मतलब चौड़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा बाकी लोगों को मिला था जॉब, सबसे पहले मुझे मिला था, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि अब हम क्या करेंगे, इसमें सी भी डाल देंगे, ऐसे एबीसी 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 कर दिया। अब तुम्हारा काम है कि सारे ए को एक जगह लाओ, बी को बीच में लाओ, फिर सी को इसमें, कैसे करो ये मुझे तुम में से कौन बता सकता है? ये जब मैंने बता दिया, फिर उसने बोला कि ठीक है तुम एचआर के पास जाओ। फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुमने तो जीआरई पक्का दिया होगा, तुम्हारा सीजीपीए ज्यादा है, तुमने जीआरई दिया होगा। मैंने कोई जीआरई नहीं दिया, मैंने कोई कैट वैट नहीं दिया एग्जाम, मुझे बस नौकरी करना है। तो उसने बोला ठीक है फिर जाओ। फिर आ गया था ऑफर, लेकिन ये बोलने के बाद उसने मुझे एचआर के पास भेजा था, ये बोलने तक उसने नहीं भेजा था। तुम मुझे बताओ कि इसको कैसे? सर हम होते तो बस कितने सारे ए हैं, कितने सारे बी है, कितने सारे सी है गिन लेते लूप में और उसको प्रिंट कर देते हैं ए टाइम्स ए। नहीं, ठीक है, हाँ तो ठीक है, वो ठीक है, नहीं वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। शॉर्ट कर देते हैं, तुमको अरे के अंदर इन प्लेस करना है। मतलब ये प्रिंट करना यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है कि अरे के अंदर तुमको रीअरेंज करना है ताकि अरे के अंदर वो वैसे सजा के रहे। पला समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो प्रिंट करना हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, नंदेश कुछ बोल रहा था। सर शॉर्ट करने का पहले पे आया कि एसआई कोड्स को यूज करके क्या करके, लाइक उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करके शॉर्ट कर देते सारे ए पहले फिर बी फिर सी। ठीक है। अच्छा मुझे ये एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया था? सर हाँ बोलो। सर वी कैन से कि ए का जो इंडेक्स है दैट शुड बी लेस देन दैट ऑफ बी, और बी का जो इंडेक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द ए, और सी से छोटा होना चाहिए। नहीं वो तो है, लेकिन कैसे करें इसको? मैं हिंट देता हूं। ये जैसे किया था ना, 2 पॉइंटर यूज करके, ये सेम चीज को यूज करना है, सेम टेक्निक को यूज करके करना है, लिनियर टाइम में हो जाएगा। इसीलिए तो उसने मुझे पूछा था ना करने के लिए, और मैंने तुरंत बता दिया उसको। 2 मिनट सोचा, थोड़ा सा डर गया था, मैंने बोला कि अरे यार ये नहीं बता पाऊंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। जब मेरे नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरे माइंड में क्या क्या आ गया कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मैंने बोला नहीं, होना तो है।
बाहर जाऊंगा, दोस्तों को बोलूंगा नौकरी लेके आया, ठीक है, ऐसे मुंह लटका के नहीं जाऊंगा। तो तुम मुझे बताओ, तुम बता सकते हो, थोड़ा सोचो इसके बारे में, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोचो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, कोई ASCII वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें। अश्मित बोल रहा है कि कन्वर्ट टू ASCII वैल्यूज, क्या होगा वो करने से? सर एस के वैल्यूज को कन्वर्ट करके उसको फिर सॉर्ट कर देके फिर रिप्रिंट टू नहीं, सॉर्ट करने में तो तुम्हारा n log n हो गया ना, हमको Yes. लिनियर टाइम में चाहिए। सर पहले सेम 2 पॉइंटर मेथड को यूज करके जो लास्ट कैसे करेंगे युवराज, बोलो क्या करना है 2 पॉइंटर उसको मेथड? उसमें पहले ए को हम लोग इनिशियली ले आएंगे, फिर वापस वही सेम चीज बी और सी के लिए कर देंगे। हाँ, ये बात है, ये बात है, ठीक है। तो युवराज क्या बोल रहा है, मैंने एग्जैक्ट ये चीज बोला था 14 साल पहले, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर देखिए, हम बी और सी को एक मान लेंगे, हम बी और सी को एक समान चीज मान लेंगे कि वो एक कैटेगरी में है, और उसको ए के साथ लड़वाएंगे। तो ऐसे करते करते सारे ए हमारे एक किनारे आ गए, और कहां पे एक खत्म हुआ वो भी पता चल गया, ठीक है। तो फिर एक को हम भूल जाएंगे, ए जहां पे खत्म हुआ वहां से लेके फिर वो सेम एल्गोरिथम चलाएंगे। अभी बी और सी को अलग अलग मान के हम करेंगे। समझ गए सब लोग? जी सर। हाँ, अब ये जो बोल दिया, फिर एचआर के पास पूछ लिया उसने, जाओ अभी तुम्हारा हो गया, ठीक है। सर मैं भी जाऊँ क्या एचआर के पास? बिल्कुल एचआर के पास जाओ। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये हमारा इनिशियल अरे था, हमने इसको यहाँ पे सेग्रीगेट किया। तो सेग्रीगेट करने के बाद नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ गया, सारे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। और हमको निकालना है कि यहाँ में से नंबर कौन सा मिसिंग है। तो यहाँ पे तुम क्लियरली मुझे बता सकते हो कि नंबर 2 इज मिसिंग, राइट। तो ये कैसे कर सकते हैं? हमको पता है कि ये बाउंड्री यहाँ पे है, इस बाउंड्री के पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स अलग अलग हो गए। Think of this array as its own array starting from location 0, 1 and 2, and you use these numbers to kind of mark the locations as negative. In the end, you go through all of them and figure out which number did not turn out to be negative, and you subtract one out of that and you will get that number. Okay? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, like you have 4, 3, 1, right? So what you do is you take the value, subtract 1 out of that. So when you get a 4, you subtract 1 out of that, you get 3. But 3 is out of bounds of this array, so we will ignore that. But when you go to 3, right, and you subtract 1 out of that, you get a 2. So what do? You mark that location. So this is 0, this is 1, this is 2, right? You change that to a negative number. So we change the 1 to a -1. Then you go to the last number, 1. You subtract 1 out of that, you get a 0. So you go to the 0th index, which happens to be 4 here. You turn that to a negative number. Then you look through the entire array and figure out that the second index here, right? The second index here is basically non-negative. And basically you get 2. That is a missing number. Okay, this is the most interesting problem, the water trapping problem. तो water trapping problem में हमको ये बोला गया है, let me share the whole screen here because I want to go to Excel. Hello? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हमको कुछ कुछ elevations दिए गए हैं. Okay, so I'll just do it this way. Like कुछ कुछ elevations दिए गए हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बड़ा सा कर लेता हूँ. यहाँ पे इस हाइट का कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस हाइट का कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस हाइट का कर लेता हूँ. ठीक है, अगर बारिश होती है तो कितना पानी रहेगा? कितना रहेगा ना पानी, है कि नहीं? Yes. तो ये कैसे कैलकुलेट करें? तो ये हाइट्स हमें दिए गए हैं. ऑल ऑफ दिस हाइट्स आर गिवन टू अस. तो हमको निकालना है. तो यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है? यहाँ पे कुछ भी पानी रहेगा, इसके ऊपर कोई भी पानी नहीं आने वाला. यहाँ पे देयर आर लाइक 4 यूनिट्स ऑफ वाटर. बट व्हाई? Because the border is यस यस. सो लेफ्ट साइड से इसका जो मैक्सिमम वॉल का जो सपोर्ट है वो ये है.
राइट साइड में जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो ये है, shorter. ठीक है, but that is shorter. So you look at the shorter of these two and you subtract the height of this thing. So the shorter of these two is kind of this, okay, which happens to be 1 2 3 4 5 6 minus the height of this thing itself. So you get 4 units of water here. Does that make sense? ये थोड़ा सा इंट्यूटिव है, समझ में आ रहा है आपको? यहां पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जो उसका सपोर्ट है, टॉलेस्ट सपोर्ट इज दिस, राइट साइड पे द टॉलेस्ट सपोर्ट इज दिस, ठीक है? तो ऐसे करके हमको करना है. तो थोड़ा सा इंट्यूशन आई होप कि हमको यहाँ पे मिल गया होगा. तो यहाँ पे मान लो ये जो बार के हमारे हाइट्स है ना वो ऐसे हैं कि ये तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, ये हाइट 1 पे है, ये 2 पे है, ये सबसे लंबा है, ऐसे है. तो हमको लेफ्ट का जो सबका लेफ्ट का सपोर्ट देखना है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हूं, मेरे लेफ्ट में सबसे टॉलेस्ट सपोर्ट कौन सा है, ठीक है? मेरे लेफ्ट में सबसे टॉलेस्ट सपोर्ट कौन सा है. तो क्या करेंगे, यहां पे 0 है, ये यहां पे 0 हो जाएगा. इसके लिए लेफ्ट में टॉलेस्ट सपोर्ट 0 है, ये 1 है, ये 1 हो गया. ये 0 है, फिर भी इसके लिए लेफ्ट में अब तक का सबसे टॉलेस्ट सपोर्ट कौन है, ये 1 है. ये समझ में आएगा नहीं? ये वाले 0 के लिए लेफ्ट में सो फार द टॉलेस्ट सपोर्ट हैज बीन 1, है कि नहीं? Yes, sir. क्या? सो वी सेट इट टू 1. अभी 2 के लिए वो खुद ही सबसे टॉलेस्ट है, लेकिन यहां पे 1 आ गया, इसके लिए टॉलेस्ट सपोर्ट इज दिस 2. ये 0 के लिए भी टॉलेस्ट सपोर्ट इज 2, तो ये 2 यहां से यहां तक सपोर्ट रहेगा टॉलेस्ट. जब 3 आ गया, ये 3 ए सबके लिए 3 विल बी द टॉलेस्ट सपोर्ट. दैट इज व्हाट यू सी हियर. ओके, 0, फिर 2 बार 1, फिर 2 यहां तक रहा, फिर यहां तक 3 बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से सबसे टॉलेस्ट सपोर्ट है. फिर राइट साइड से हम देखेंगे, ठीक है, ये 1 है, जब 2 आ गया तो यहां तक 2 रहेगा, ये 3 आ गया तो पूरे यहां तक 3 रहेगा, जो कि हम यहां पे देख रहे हैं. देखो ये पूरा 3 है, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 1 है. तो हमको सारे पोजीशन के लेफ्ट का टॉलेस्ट सपोर्ट, राइट का टॉलेस्ट सपोर्ट और खुद का जो हाइट है ये पता चल गया. अब हमको क्या करना है, बस ये करना है ना? इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, जैसे कि एक्सेल में दिखाया था कि वहां पे लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट छोटा था, माइनस द हाइट ऑफ दैट थिंग अगर कर देंगे तो उसके ऊपर कितना पानी है हमको वो मिल जाएगा. फिर सबको सम कर देंगे, टोटल पानी हमें मिल जाएगा. समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. Yes. Sub array with given sum. So this is also very, very intuitive, right? So let's take a look at the example here. So we have an array and the target is to find a sub array, contiguous sub array. Array को sort नहीं करना है, बीच में gaps नहीं आ सकते. And the sum of that goes to 23. ठीक है? तो इसमें क्या कर सकते हैं? We have to keep a sliding window, but the window will kind of, you know, be flexible. वो बड़ा और छोटा, वो चौड़ा और नैरो हो सकता है. ठीक है? तो what we will do is we will keep 15 in our window. Okay? So is 15 smaller than 23? Yes. So we will try to take 2 inside the window. Is 17 less than 23? Sure. Now we will keep all these 3 in the window. That is 21. Is 21 less than 23? Yes. Now we will try to keep all of these 4. We go to 29. But 29 has become greater than 23. So what can we do is we can let 15 go. ठीक है? हमको फिर 29 से नीचे आना है ना? क्या करेंगे? 15 को जाने देंगे. Now our window has become this much. All right. What is the sum here? 4, 2, 6, 8, 14. Okay. इसका कितना है? 14 plus 9. Is this 23? Yes. Is this 23? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is 23. Right? So हमको क्या करने को दिया गया है यहाँ पे? Subarray with given sum. If there is a subarray with a sum equal to a given value,
But is it a necessity that there is only one subarray with that sum? Not necessarily, right? You can stop here, but you can also continue moving, and this will be another subarray, just one element whose sum is equal to 23, right? But that is exactly what we do here. So we set the current sum to the first element, and we set the start to 0, right? And then that is the start of the window. Start is the index of the location where the window starts. Then we start from the second element. While the current sum is greater than sum and start is less than I minus 1, current sum, you subtract that and you move the thing here, right? अगर कोई भी time पे the sum becomes greater than, right, then what you do, you decrease the size of the window. Okay, so what happens is that at some point this might be the case, then you print and then you return, right? What are we doing here? If I is still inside, then you include that in the current window, right? This is where we are expanding the window on the right. This is where we are decreasing the size of the window on the left. This is where we are checking if the window's sum is exactly equal to the sum. All right. So we will keep on decreasing until the sum of all the elements in the window becomes less than that number, less than equal to that number, and definitely not bigger than that number. If it is equal to, then print and get out. Otherwise, you keep increasing the bounds of the window on the right side. And since we are checking I less than size, right? That's why you can go all the way up to size. You will not breach the boundary. Okay. That's exactly what we are doing here. So is this clear to everybody? Yes, sir. Okay. Cool. Now we are at the very end. Longest substring without repeating characters. So we have to figure out the longest substring inside a string, right, that does not have any repeating characters. So this is also a pretty easy one. So let's just say this is the string. Okay, we have to find the longest substring out of this string that does not have any repeating characters. So you initialize these variables, like n is the length of the string. Result is the longest substring found so far. And last index is an array of 256 ASCII characters. You can do this for only 26 lowercase alphabets, or you can do this for 26 uppercase, 52 both cases. For the on the safe side, just go for all 256 ASCII characters, and all of them are initialized to -1. What is the significance of this last index? You've set it to -1 everywhere, right? If you encounter an A, what will you do? You will set the index of A wherever. What is the value of A? Some ASCII value, right? So you go to that location on the array and you say, this is the location where we last found A. This is the location where we last found B. Okay, that is for that. Okay. So what do? We set n equal to 8. That is the length of the string, which is like 8 here. The result is 0. We have not encountered any longest string up until now. And last index is set to -1 for everything because we have not encountered any character until now. So what do? We figure out the first character, that is A. So we set the last index of A, right? This is a char which has an integer value. So we can go to that location in the array, right? And we can set it to 0. Okay. Why is that 0? Because A was found at location 0 in the string. Where is A in the string? At position 0, right? So we will just do some bookkeeping here and say that A was found at location 0. Our window is right now A, and the longest substring that we have found without any repeating characters is 1.
Now we go get B. Okay, what do? We set that B was last found at location 1. The window is AB, and the longest string that we have found without any repeating characters is 2. When we get to C, we do that. C was found at location 2, 0, 1, 2. The longest string is 3, and the window is ABC. Okay, now is the fun part. We get A, and A is certainly a repeating character, right? And how do you figure that out? That A got repeated. You look at the last index of A, which is 0. Is 0 certainly inside this window? Yes, it is. 0 is inside this window. It is basically this part of the window, right? So what happens here? We shift the window. Okay, we make it BCA. We got rid of the A on the left side because we got another A on the right, and that is a repeating character. And the last index of A now has become 3. Why? Because that is the latest where we saw A occurring. A is at location 3 here, right? This is 0. It was 0, 1, 2, 3. This is position 3. Okay, and the window got shifted. And you continue this logic, right? Anytime you encounter a character whose last index is inside the current window, you cut it out. You cut it out until that position. Okay. You cut it out until that position, right? So let's just say we get another 0 immediately. What would you do? You will cut out the entire window until that point, right? All that B, C, A, everything will go away. Make sense to you? So this is exactly how you do this on pen and paper. If you have a huge string and you look at each character coming on from the right side, and you have this window open, right? This character has come, and you figure out where did we last see this character. If it is outside the window, that is fine. But if it is inside the window, that means this is a repeating case. We will shrink the window up to what point? Till we can get rid of that A or whatever is getting repeated on the left side. Till we can get rid of that, we will shrink the window up till then. Right? And anytime this window that you have becomes greater than whatever the greatest window you have seen until now, you will update the rest value. Right? So if you see a window which is of size 4, at that point this rest will become 4. And at the end you can print the longest window. The longest substring with no repeating characters is 4. In this case, it is 3. Okay. That's exactly what we are doing in the code here. Right? So n is basically the length of the string. The result is 0 because we have not seen any substring up until now. And the last index is the number of, it's an array, static array, and number of characters is a macro, is a constant set to 256. And we just do a memory set because these are all random characters, right? So random numbers inside this array. So when you do a memory set, right, and it sets it to -1 for all the locations, like all the locations in this array are now set to -1. So you start a loop, right? And this is basically what you do here. What is this I? Start index of the current window. Okay. And what is going on here? Can someone explain what is going on here? Like take a look at this line. That's exactly what I told you right now. Last index. So what is J? J is something that is coming on from the right. Yes or no? J basically is going from the first character up until n. And n happens to the length of the string. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now, what is this? Last index of strj. It is like that A that came on the right side. Right? And whose last index was? What was the last index of that thing? Here.
Yeah, when we got this character, last index was 0, right? What do? We move A past that point. What is I? I is the left boundary of the window, right? And what did I tell you? That you have to make the left boundary of the window jump past the point of the repeating character. Did that sentence make sense? So your window was like this. The moment you got this A, what did you do? You considered this as the window. You moved the left boundary of the window past this A. What was the last index of that A? 0. You added a 1 to it. Okay? You added a 1 to that. And you moved the boundary. Does that make sense to you? What did we do there? And what is this check doing here? Last index plus 1 is greater than I. This is where we check if the element that came in from the right, the last time it occurred, it was inside the window or not. I is kind of the left boundary, right? If this is true, what does that mean? That means that whatever element has come in from the right side, which happens to be this element, when the window was ABC, A came in from the right side. Was A already inside the window? Was A already inside the window? It was here, and the window was ABC, right? It was already inside the window. This character happens to be a repeating case, so I has to be updated. To what? To the point right of the repeating character. That means it starts from this B. Okay. And if that is not the case, you keep I the same. There is no need to move the left boundary of the window. Left boundary को उधर ही रखो. राइट से बढ़ाते रहो J को. जब तक कि कोई ऐसा कैरेक्टर ना आ जाए जो कि ऑलरेडी विंडो के अंदर है. अगर विंडो के अंदर है तो लेफ्ट के बाउंड्री को यहां तक लेके आ जाओ. उस कैरेक्टर को बस छोड़ के उसके राइट तक लेके आ जाओ. समझ में आया आपको? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. ओके. सो दैट इज. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. कोई एक स्ट्रिंग बोल दो यहाँ पे. ए बी सी डी ए बी सी डी. मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे हम एक जेड एक्स में लगा देते हैं. ए बी सी डी ए. ठीक है. एच जे. ठीक है. इस केस में क्या होगा? मैंने क्या किया, आई अभी इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है. दिस इज वेयर आई इज. और जे अभी इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है. जे इज राइट हियर. अब ये एक्स को हम देखेंगे. व्हाट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ एक्स? वो तो -1 है. ठीक है. तो उसको हम सेट कर दें कि चलो ये अभी लोकेशन नंबर 1 पे हमको मिल गया. ठीक. अभी हमारा विंडो इतना बड़ा बन गया. विंडो का मतलब क्या है? आई टू जे के बीच में जो है वो विंडो है. ठीक है. अभी ए आ गया. ए का लास्ट इंडेक्स क्या था? -1. अब तक आया ही नहीं है. चलो उसको अभी हम 0 1 2 पे सेट करेंगे. ठीक है. ध्यान में रखो 2. यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं. लास्ट इंडेक्स ऑफ ए इज 2. बी आ गया, -1 था, उसको हमने 3 पे सेट किया. सी आ गया, -1 था, उसको हमने ये जे को हमने बढ़ाया, डी तक लेके गए. मतलब हमारा विंडो अब तक तो पूरा ये बन रहा है. कुछ भी रिपीट अभी तक हुआ नहीं है. लेकिन जब ये ए फिर से आया, ठीक है, इसका लास्ट इंडेक्स क्या था? कोई बताएगा मुझे? ए का लास्ट इंडेक्स क्या था? 2.
Yes or no, anyone? Yes, sir. Is the 2 inside this window? ये विंडो के अंदर है क्या 2? ये 2 जो है ये विंडो के इनसाइड है, यहां पे हम चेक कर रहे हैं, है विंडो के इनसाइड है। तो क्या करेंगे हम, ये 2 के लास्ट सीन को हम अपडेट कर देंगे जो भी है, लेकिन पहले हम ये बाएं तरफ के विंडो को कहां तक लेके आएंगे, ये बी तक लेके आएंगे, B3. बी तक लेके आएंगे, जो कि क्या है, ये 2+1 है बस। और अभी ये ए के जो लास्ट सीन को हम क्या अपडेट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, उसको 6 पे सेट कर देंगे। तो ये अभी हमारा विंडो चल रहा है, फिर एच आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक विंडो है, इसमें कितना रिजल्ट है, 1 2 3 4 5 6 है, और यहां से यहां तक भी एक विंडो था, इसका भी वैल्यू 6 था। दोनों में से कोई भी तुम्हारा लॉन्गेस्ट विंडो हो सकता है। ये आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ आप लोगों को अभी? Yes, sir. ओके, ठीक है, अभी ज्यादा टाइम और बच्चों को नहीं रखते हैं। एक बार फिर से ये रिकॉर्डिंग को जाके देख लेना, ब्लॉग्स को फिर से फॉलो करना, तुम्हारा अरेज का हो गया। और जल्दी से मैं तुमको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने लिंक लिस्ट का जो ब्लॉग है मैंने वो यहाँ पे अपडेट कर दिया है। यहाँ पे आपको लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सब के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। इन सब के ऊपर जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, लेंथ, जो भी एग्जॉस्टिव सेट है वो पूरा आपको यहाँ पे सब चीजों के लिए सिंगली डब्ली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए मिल जाएगा। फिर आपको इसके अंदर बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, एक्सपर्ट लेवल के सारे प्रॉब्लम्स, उसके हिंट्स और उनके सारे सोल्यूशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज है, यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स पे दिया है कि कितने परसेंटेज क्वेश्चन लिंक लिस्ट से मिलते हैं। और ये जो रिवर्सल लिंक लिस्ट है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, साइकिल डिटेक्ट करना बहुत कॉमन है, ये हर इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं। लिंक लिस्ट को मर्ज करना, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत कॉमन है। तो जॉब में जाने के पहले कम से कम इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके चले जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे इंटरव्यू में आ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।